The 4 T20I between India and South Africa was called off on Wednesday owing to poor visibility after a dense layer of smog engulfed the Ikana Stadium, raising serious question about BCCI scheduling of matches in northern part of India during peak winter month. It is also a period when polluting levels in the host cities like Lucknow, New Chandigarh and Dharamshala are usually at its worst. The 4 T20I was officially abandoned without a ball being bowled due to excessive fog. The reality was that a thick blanket of smog enveloped the Ikana Stadium, severely hampering visibility. The AQI remained in the hazardous range above 400 in Lucknow on Wednesday, raising serious question about the BCCI's commitment to players' welfare. Star all-rounder Hardik Pandya was seen wearing a surgical mask to counter the pollution while the Indian team warmed up ahead of the game. The match, scheduled to start at 7 p.m, was eventually called off at 9:30 p.m. after the sixth inspection, although it was more of a formality, with everyone present well aware that visibility was only going to get worse as the night progressed. Players had abandoned their warm-up session by 7:30 p.m. and returned to the confines of the dressing rooms. By 9 p.m, the sizable crowd that has braved the cold conditions had also begun to thin out. With no reserve day in place, both teams will now fly to Ahmedabad for the final T20I on Friday, with India leading the series 2-1. The national capital has implemented stricter measures to curb rising air pollution, with authorities enforcing a ban on non-Delhi private vehicles that do not meet BS6 emission standards. From Thursday, the no PUC, no fuel rule has come into effect, halting fuel supply to vehicles without a valid pollution under control or PUC certificate. Police personnel have been deployed at 126 checkpoints, including city borders, to monitor compliance. Traffic police personnel are personally checking PUC certificates of vehicles before allowing refueling at petrol pumps. जो डीजल की गाड़ी है BS4 की, BS4 या उससे नीचे की जितनी भी गाड़ी है उनको वापस घुमा जा रहा है। PUC भी चेक हो रहा है। जिनका नहीं है उनका चालान किया जा रहा है, या भी चालान किया है आपके सामने। ये 10,500 रुपये का चालान है इसका। जी। आप कैसे चेक कर रहे हैं कि ये गाड़ी BS6 का है? गाड़ी हमारे पास ये मशीन है, मशीन के अंदर नंबर डाल के, ये इसके अंदर नंबर डाल के तब उसकी डिटेल आ जाती है, सारी की सारी उसमें चेक किया जाता है कहाँ ये BS6 है या BS6 से नीचे की है, BS4 है, ये बताएगी उसके अंदर। Fuel pumps are not dispensing fuel to vehicles without valid PUC certificates, and this is being enforced with the help of automatic number plate reader cameras, voice alerts at pumps and police support. नहीं, ये तो खैर नियम तो सख्त है, करना चाहिए। नियम तो खैर पहले भी लागू हुए हैं, अभी भी लागू कर रहे हैं, अच्छी बात है। पोल्यूशन तो कराना चाहिए लोगों को। बिल्कुल सही है, होना चाहिए, ये जरूरी है, जो जरूरी चीज़ है वो होनी चाहिए। Meanwhile, dense fog enveloped large parts of Delhi NCR on Thursday morning, significantly reducing visibility and disrupting traffic across the region. People visiting Akshardham said that pollution had contributed to the dense fog, shrouding the temple and making it nearly invisible. बहुत से लोगों को लगता है कोहरा है, बट मैं बताना चाहूँगा कि कोहरा नहीं, ये पॉल्यूशन है। और मेनली मैं अपनी वीडियो का शूट लेने आया था अक्षरधाम से, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, अक्षरधाम दिखने को राजी नहीं है क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है। तो मैं लोगों को बस यही कंसर्न करूँगा कि सेफली रहें, अपने घर में रहें, क्योंकि ऑलमोस्ट इतना कोहरा हो चुका है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि यहाँ पर हमारे को 10 मीटर दूरी तक भी गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट केसेस बढ़ रहे हैं कोहरे के कारण, पॉल्यूशन के कारण। तो यही है कि सेफ रहें। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बस चाय पीने और घूमने आए थे, और हम यहाँ पे अक्षरधाम से, आप जैसे देख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं और अक्षरधाम एकदम ही विजिबल ही नहीं है, और यहाँ पे एक गाड़ी भी आ रही है सामने से, तो दिख नहीं रहा है कहाँ पे क्या है, और इस वजह से काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों को इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हो रही है। Weather officials said foggy conditions are likely to persist during early mornings in the coming days as winter intensifies. The IMD has forecast dense fog on Thursday and Friday. The entry ban on non-compliant BS6 vehicles, however, does not apply to vehicles running on CNG or electric power, public transport and vehicles providing essential services.
Vehicles carrying construction materials are also not permitted to enter the city under the GRAP 4 restrictions. Air quality forecasts indicate that pollution levels are likely to remain in the very poor to severe range over the next 5 days.